So, as you saw in part 2, after having a great time in the Bora caves in Araku Valley, we are heading straight towards Odisha border, and our first destination will be the beachside stay at Gopalpur, Odisha. This is the town of Vizianagaram, from where we will head straight towards the NH16, which will connect us to Odisha and eventually to Bengal. As you can see, smooth and buttery highway with beautiful view on both sides. There's certainly a bit of wind blast, but while you enjoy the view, let me quickly share a story with all of you. So ये ट्रिप जो है बेसिकली ये कभी होने नहीं वाला था. Yep, we never planned to ride on East Coast. हमारा प्लान था कि basically we will cover the state of Uttarakhand during November. बट उस टाइम क्या हुआ कि अपने जो भाई साहब है, जो कार्तिक भाई साहब जिनके साथ में राइड करता हूँ, दैट गाय ब्रोक हिज एल्बो. यप, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही ब्रोक हिज एल्बो. तो हमें अपना राइड कैंसिल करना पड़ा, एंड द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम बाय विच ही कुड गेट फिट एंड कम बैक टू द एक्शन ऑफ बाइकिंग वाज ओनली समवेयर इन दिसंबर. सो हमने सोचा कि चलो दिसंबर में लेट्स नॉट राइड टू उत्तराखंड, इट विल बी टू कोल्ड, तो कहीं ईस्ट कोस्ट चलते हैं. बट ध्यान दिया जाए तो आई मीन इन क्रिकेट वी ऑल हैव हर्ड अबाउट LBW, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली हियरिंग अबाउट LBOW. Yep, it's I have named it as LBOW. Yep. Okay, so keep watching. So we finally entered Odisha and now into the town of Gopalpur. It's just next to the sea, and we are just searching for a random hotel to stay. So let's see अपना कार्तिक भाई क्या करते हैं, कहाँ पे होटल ले पाते हैं. कार्तिक भाई ने अपना एक रिजॉर्ट चूज़ किया है और काफ़ी महंगा लग रहा है. Let's see whether he can strike a deal. He's planning for a U-turn. Okay. So अपने कार्तिक भाई ने यहाँ पे चेक किया, सनायरा रिजॉर्ट्स एंड स्पा, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो रूम, क्योंकि सारे रूम्स किसी ओकेशन के लिए ऑलरेडी बुकड हो गए थे. सो यप, वी हैव टू फाइंड समवेयर एल्स. We found a room in this hotel Mermaid. So random room search करने का यही एक problem है. You have to just keep searching and suddenly you get lucky. So finally we settled down at this motel Mermaid, और देखते हैं कल सुबह क्या होता है. So the first shot of the Gopalpur beach through this spooky zone at 6 o'clock in the morning. Yep, the beach and the sunrise view is wonderful. So let's catch some glimpses of sunrise at Gopalpur. Gopalpur, Odisha. Morning 6 o'clock now. Just come out for a stroll.
So from Gopalpur, we head towards Chilika Lake in Odisha. Highways are flat and smooth, and slowly the scenery and the view changes. We have lake all around us. Let's see. So Chilika Lake spreads over the Puri, Khurda and Ganjam districts of Odisha and covers a huge 1100 square kilometers. So this lake is the largest coastal lagoon in India and also the largest brackish water lagoon in the world. So that's something really worth knowing. And this is also in the tentative list of the UNESCO World Heritage Site. Yep, good place to be in. The lake is the largest wintering ground for migratory birds in the Indian subcontinent, and the livelihoods of 1.5 lakh fishermen is dependent on this particular ecosystem. So now comes a twist in the tale. We are in the Chilika zone and we wanted to view the dolphins in the Chilika Lake, and after that we wanted to go to Puri and eventually to Konar. But we are on our bikes, so how exactly to cross the Chilika Lake? उसके लिए थोड़ा सा कसरत करना पड़ा, and what exactly it is, let's see. आराम से आराम से कार्तिक का बाइक तो लोड हो चुका, अभी मेरी बारी। और इसके बाद ये लोग जो है हमें चिलिका लेक में डॉल्फिन दिखाएंगे, पूरा लेक घुमाएंगे एंड दे विल ड्रॉप अस टू द अदर एंड ऑफ द लेक, जहाँ से हमें पूरी रूट कनेक्ट करने को मिल जाएगा। एंड विल जस्ट हैव अ शॉर्ट ब्रेक एट पूरी एंड देन वी विल गो टू कोणार्क। सो दैट्स द प्लान। देखते हैं बाइक ठीक से चढ़ती है या नहीं।
So finally we were able to spot dolphins. As you can see, it's just around our boat. Yep, one more. And as you can see, we were being trolled by the migratory birds who were coming very close to the boat in search of food. And generally tourists offer some food to these birds, so that's the reason that they flock very close to the tourist boats. Clever. So that's the end of Chilika Lake, folks. See you next in Puri, Konark, and finally in Kolkata.